Hello everyone. Today we will solve some numerical and start equation of uniform acceleration motion. So first, this is your question. A bus covers half distance at v speed and remaining half distance at v1 speed for time 1/3 time, and that remaining half distance cross with v2 speed for 2/3 time. Then find the average speed. And we know that average speed is equal to total distance upon total time. Then according to this question, a bus covers half distance at v speed and remaining half distance is something speed. So according to question, I suppose our total distance को 2D consider करना, जहाँ कि half distance e power d, this is first half distance and this is another half distance. And according to question, the bus cover half distance at v speed. First half distance का bus cover करवा काजे v speed यूज करा, है ना? Then question and second remaining half distance at v1, can you see the remaining half distance रहेला, ये remaining half distance के से bus का दुईटा speed रे cover करा. First v1 speed रे cover कला and second v2 speed रे cover कला. तार माने suppose धरो ये v1 speed और v2 speed रे cover कला, और according to question v1 speed रे cover करवा काजे ताके time केते required हैला 1/3 time and v2 speed रे जीवा काजे ताके time दरकार हैला 2/3 time. So suppose this remaining half distance, the bus covered this remaining half distance with time t. Then as for this question, v1 speed cover करवा total time रो 1/3. That means total time जदि हमें remaining half distance रो t धरमा, ले total time रो 1/3 केते हवा? v1 speed रो काजे time ही जीवा v1 speed रो काजे धरो time के नाम में t dash, v1 speed रो काजे time ही जीवा तो 1/3 टाइम, तामाने टोटल टाइम जदि हमें रिमेनिंग डिस्टेंस रो t नेलु, t रो 1/3 हला v1 स्पीड कवर करबा. Then while the bus cover the remaining half distance with v2 speed, then it require time 2/3 time. 2/3 time, that means remaining half distance रो टाइम के जदि हमें टोटल t धरमा, तो ता 2/3 केते हवा? ता 2/3 हवा, इने ही डबल डैश धरो 2/3 हवा टोटल टाइम रो total time रो 2/3, that means total time रो 2/3. This is your question. Like पढ़ेला बोलते हैं. देखो तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देलु, एबे हम बाहर करमा टोटल डिस्टेंस केते कवर करूचे और टोटल टाइम केते कवर करूचे, then we get average speed. Then as for this question we let total distance is 2d. That means total distance is 2d. एवं कि total time दरकार, तो suppose धरो कि bus टा first half distance cover करवा काजे, suppose धरो first half distance cover करवा काजे bus टा time require करा t1, तो से t1 केते हवा? We know that first half distance रो काजे bus रो speed होचे v और distance होचे d. So we know that speed is equal to distance upon time. So time is equal to distance upon speed. That means in this case first half distance d and speed v. So in this case time is d by v. Then how can we get the time t dash and t double dash? Then t dash और t double dash के हमें मिश्रण में बोले कितने पाएगा? टोटल टाइम तय, अभी टोटल टाइम t लो v1 स्पीड रे जीवा पाई t by 3 कवर कला, और टोटल टाइम t v2 स्पीड रे जीवा पाई से टोटल टाइम रो 2/3 कवर कला, 2/3 कवर कला. सो क्वेश्चन हिसाब रे दबर बना जाई छे. तो फर्स्ट t नो टोटल टाइम बाहर कर दमा t, बिकॉज़ नो टाइम तो तुम t1 बाहरी गला, t1 प्लस t नो टोटल टाइम t एका संगे बाहर कर दमा ना हमें t dash
टी डबल डेक्स बाहर नहीं कर करी डायरेक्ट हम टी बाहर कर देमा और आराम से बाहरी जीवा देखो बिकॉज ई जे टोटल डिस्टेंस कवर करूची केते डिस्टेंस कवर करबा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सो इन दिस केस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ई केते स्पीड रे कवर करबा v1 स्पीड रे कवर करूचे केते टाइम रे t/3 at this moment and second the bus cover remaining half distance with v2 speed and time t double dex which is equal to 2 upon 2 into t/3 then the second distance about v2 into that time 2 t/3 so total distance will be the van cover with v1 speed with time dex how much distance cover we can find similarly the man cover with t double dex time with velocity or with speed v2 then how much distance cover we can be and we add these two distance then remaining half distance will be found so e point पे तुम्हारा speed कितना है so इस point पे distance कितना है speed into time e point पे distance कितना है that speed into time और टोटल डिस्टेंस तो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस भी 20 में समान सो देखो अब हम आराम से t बाहर कर पारमा देखो t/3 3 আছে हम डायरेक्ट कॉमन लेब तो ये 3 कॉमन गले या के 3d हबा यार v1t प्लस 2v2t देन इस t कॉमन जीवा तो 3d इज इक्वल टू t v1 plus 2v2 that means we want to find this time e equal to 3d upon v1 plus 2v2 that means हमें फर्स्ट टाइम t1 पाई गलु और सेकंड हाफ डिस्टेंस रो टाइम के जदि हमें टोटल टाइम t धरलु t भी पाई गलो किंतु t के हिसाब रे पाइलो फर्स्ट v1 स्पीड और टाइम e पॉइंट रो डिस्टेंस बारी गला v2 स्पीड एंड टाइम e पॉइंट रो डिस्टेंस बारी गला और टोटल डिस्टेंस का ये हाफ डिस्टेंस रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस का समान क्लियरली बुझला तो एड करो दुटा के बिकॉज़ ई पॉइंट ऑफ टाइम हला ई पॉइंट ऑफ डिस्टेंस हला v1 into टाइम ई पॉइंट ऑफ डिस्टेंस हला v2 into टाइम then total distance is equal to this distance plus this distance is the remaining half distance d तो से केस में हम टाइम पाई गलो करे पुट करम t1 plus t because first half distance कवर वाला t1 टाइम रे और सेकंड हाफ डिस्टेंस कवर करी छे t टाइम रे पुट करो then 2d by t1 जगह केते पाएबो d by v because first distance d with speed v then first distance cover करवा के टाइम वाला d by v so d by v plus t केते पाइछो 3d by v1 plus 2v2 तो तुम ये सॉल्व करबो निजे आंसर बाहर करबो dd कॉमन लेबो dd कथि जीवा जहां भी आंसर बारीबा निजे ट्राई करो निजे बाहर करबा नेक्स्ट क्वेश्चन will be s is equal to 3t square plus 4t plus 9 find velocity at time is equal to 2 seconds. This is first question and find average velocity. Find average velocity between 1 to 4 seconds. सो ई टाइप रो क्वेश्चन नंबर बहुत कला ना और थोड़ा देखो इससे करो तो डिस्प्लेसमेंट हमके दी दी छे वेलोसिटी पचरे छे जेतु फंक्शन हिसाब रे दी छे सो वेलोसिटी रो फार्मूला आसबा डिफरेंशियल फंक्शन ds upon dc that implies v is equal to d by dt of s जगह के जेते दी छे पुट करो 3t square plus 4t plus 9 that means s is equal to 6t plus 4
9 dot 0. Then as per this question, this velocity can be calculated at 2 seconds. So instead of t we put 2 seconds and 6 into 2 plus 4. That means 16 meter per second. This is your answer. Then we find the average velocity between 1 to 4 seconds. So what is the formula of average velocity? Average velocity is equal to total displacement upon total time. But in this case, the velocity is found between 1 to 4 seconds by using differentiation function. So differentiation function to जब तुम average velocity calculate करबो, पहले always तुम्हार final displacement minus initial displacement divided by final time minus initial time. आई फॉर्मूला सब बेले केते बेले यूज हेबा जेते बेले तुम्हार एवरेज वेलोसिटी ता तुम्हार जे कोनोसी इंटरवल टाइम इंटरवल रो बाहर करबो, किंतु डिफरेंशियल फंक्शन रो जदी बाहर करबो बेले सब बेले एवरेज वेलोसिटी रो फॉर्मूला हेबा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो मने रखिथिबो मु जहा कहूची तो हम बाहर करमा t2 t1 तो बाहर जीवा बिकॉज़ टाइम पचरे छै 1 to 4 सेकंड भीतर एवरेज वेलोसिटी बाहर करो बोल छै. सो t1 अब 1 सेकंड t2 अब 4 सेकंड. दैट मींस t2 4 minus t1 1. एबे असला में s2 और s1 के हिसाब रे बाहर करमा. s रो तो ऑलरेडी वैल्यू दी दी छै. तो फर्स्ट 1 सेकंड रे s जेते हवा सरा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. दैट मींस इन टाइम 1 second initial displacement s1 कितना होगा 1 पुट करो तो 3 into 1 3 4 into 1 4 plus 9. That means initial displacement 3 4 7 9 16 अब initial time रे initial displacement पालो. अब फाइनल टाइम पुट करो, फाइनल डिस्प्लेसमेंट पाइलो. अब फाइनल टाइम हो 4 सेकंड पुट करो, देन फाइनल डिस्प्लेसमेंट s2 इज इक्वल टू 4 पुट करे 3 4 into 4 16 into 3 plus 4 into 4 plus 9 3 of 48 plus 4 plus 9. That implies 48 4 52 and 9 61 meter. So देखो कंप्लीटली तुम बुझबो जे जदी तमर फंक्शन दिथिबा आ एवरेज वेलोसिटी पचरे छै बेले तो तमे आगो फार्मूला के आगो मने पकेबो. तो फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एसी. बट इन दिस केस जे तो फंक्शन हिसाब रे बाहर करबो तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस फाइनल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हेबा. तो इन तमर डायरेक्ट ईर वैल्यू पुट कर देले डिस्प्लेसमेंट ता तमर इनिशियल टाइम पुट करे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट असला और फाइनल टाइम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 4 दीचे तो फाइनल टाइम पुट कर देले फाइनल डिस्प्लेसमेंट पले असला. तो पुट करो एबे फाइनल डिस्प्लेसमेंट 61 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 16 जहां भी बाहर दैट इज एवरेज वेलोसिटी. नेक्स्ट हम बाहर करमा इंटीग्रेशन यूज करिवर के हिसाब बाहर करबो. देखो तुम जदी s रो वैल्यू 3t स्क्वायर देखिबा आ तुमके वेलोसिटी बाहर करो कहिबा तो तुम आराम से बाहर करबो ds/dt = d/dt of 3t square. That means 2 6t. अब हमके t जगह थी जेते धरो t जगह थी तुम कहिबा 2 सेकंड बाहर करो ले 6 t जगह 2 पुट करबो तो वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकंड. बस जदी तुमके डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी बाहर करवा क्वेश्चन नहीं करी जे तुम वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट पचले थिबा. दैट मींस सपोज velocity is equal to t plus 1. जदी वेलोसिटी तुम t plus 1 दिथिबा आ तुमके पचले थिबा फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. हाउ कैन वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? सो s रो v डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी हम आराम से पाई पारबा बिकॉज़ ds/dt
কিন্তু ভেলোসিটি টু ডিসপ্লেসমেন্ট পাওয়া বলছে, ভেলোসিটি টু ডিসপ্লেসমেন্ট পাওয়া। তো এটা রিভার্স प्रोसेस से लगा जे देखो डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी पाएमा बोले हमें डिफरेंशिएट यूज करथिलु एबा हमें वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट पाएमा तो रिवर्स प्रोसेस मींस इंटीग्रेशन यूज होबा। तो फार्मूला भी जाना पड़ुछे देखो जदी हमें फार्मूला जदी पकेमा बोले v = ds upon dt and according to this question we find the velocity displacement of the body, so ds = v into dt। सरला और सिंपल मैथमेटिक्स से तुम इंटीग्रेशन जन जगह रे यूज करले नो प्रॉब्लम। अब इन इंटीग्रेशन बाहर करबो बिकॉज़ तुमके वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का बाहर करबो बोलथिबा सपोज फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकंड 0 to 2 सेकंड भीतर तुम डिस्प्लेसमेंट बाहर करो कहथिबा तो तुम क्या हिसाब से बाहर करबो देखो। तो तुम लिमिट्स देखो ये तो तुम डिस्प्लेसमेंट और इंटीग्रेशन ds by s इजिबा दिस इज v dt। तो ये फार्मूला के मन रखिबो ये फार्मूला ही यूज होबा। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v जगह रे केते दीचे t + 1 तो इंटीग्रेशन ऑफ t + 1 देन dt is dt। And according to this question, we find the displacement from 0 to 2 seconds. That means time रो limit लगवा 0 ରୁ 2 सेकंड। Then तुमके तो इंटीग्रेशन पढ़ा जाई छे तो मैं आराम से सॉल्व करि पाबो इंटीग्रेशन। That means t out 1 दुईटा फंक्शन আছে। That means इंटीग्रेशन फर्स्ट t dt रो काजे नेबो 0 ରୁ 2 प्लस 1 रो काजे थोड़ी इंटीग्रेशन नेबो 0 ରୁ 2 1 dt। That implies this is t square upon 2 integration करला पर लिमिट आके पड़ेला प्लस in this case 1 constant बाहरी जीवा then dt रो इंटीग्रेशन t 0 ରୁ 2 सल्ला देबे तमरी अननोन वैल्यू जाती तुम जाइन छ थोड़े हायर लिमिट पुट करबो थोड़े लोअर लिमिट in अभी थोड़े हायर लिमिट थोड़े lower limit। That implies if you put t जाते थोड़े 2 पुट करबो that means 2 रो स्क्वायर upon 2 माइनस 0 पुट करबो बोल तो 0 ही होबो लिखि देबो प्लस 1 into t जाते थोड़े 2 पुट करबो t जाते थोड़े 0 that means 2 minus 0। So final answer will be displacement will be 4 by 2 each 2 into 1 2 yes. That means finally displacement will be 4 meter। क्लियरली बुझलो जदि नहीं बुझबा वाला आ थोड़े वीडियो रिपीट करबो। Next question v is equal to t plus 1 find s at the end of 4 seconds if initially the body is at origin in this case also we find the velocity displacement from velocity। so here also we use integration that means displacement is equal to integration of v dt। but here देखो लिमिट टा नहीं दबा तो दिस इज ए indefinite integration because in this case there is no proper limit। so use करो फर्स्ट वैल्यू पुट करो v dt that means integration of v जाती लगभग t plus 1 then dt is dt। solve this
এবার আমি জাস্ট সলভ করলাম, আমি করিবি পারবো নিজে। ইন্টিগ্রেশন অফ টি ডিটি প্লাস integration of t dt plus integration of 1 dt. That implies t dt the integration of t square by 2 plus dt the integration of t. And we know that as this is a indefinite integration, so we are integrating constant. अब ई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रो वैल्यू तुमके देवा पाई इनोडे क्लू दीची तब लास्ट के जहां भी आंसर बाहरला पड़े तो डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में बाहर करो बोलछे तो टाइम जगह ना में 4 पुट करना। सो देखो सी रो वैल्यू पाबा के जन के क्लू का दीचे, क्लू देखो क्लू के मन पके दोचे सी रो वैल्यू पाबा के क्लू दीचे आपके काने देखो जे if initially the body is at the origin, initially means time is 0 second, initial time, and the body is at origin, body जब origin में रहा वाले displacement कितना होगा 0 second. So ई equation रो ई हमें सीड वैल्यू के पुट करना, सीड वैल्यू को डिराइव करना और थोड़े ई इक्वेशन में पुट करना. सो देखो तो क्लू दीजिए यदि इनिशियली रहा बॉडी 0 सेकंड रहा ताने तो बॉडी इज ओरिजिन मींस डिस्प्लेसमेंट 0 तो सीड वैल्यू पावा जे तो क्लू देला t = 0 s = 0 दैट मींस s जगह 0 पुट कलो t जगह 0 पुट कलो लास्ट के देखो c रो वैल्यू हबा 0 ही 0 सीड वैल्यू 0 ही हबा बिनो सब 0 ही 0 सीड वैल्यू 0 हबा तो ई इक्वेशन रो सीड वैल्यू पाइला पर से इक्वेशन में ही पुट करबो तो फाइनली s = t square by 2 plus t plus c जगह 0 पुट करबो देन as for this question displacement बाहर करना में 4 सेकंड रे तो टाइम जगह 4 करबो 4 square by 2 plus 4 that means it is 0 that means this is 16/2 I plus 4 12 this is 12 देखो जे बुझी नहीं पारबा वीडियो रिपीट करके देखबो आराम से बुझी पारबो किछ नहीं ना नेक्स्ट आउट क्वेश्चन दोछन तो जेहेतु इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन तो से रीजन का जे हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज करनु किंतु डेफिनाइट इंटीग्रेशन तो हम स्टार्टिंग रे पढिथिली जाने कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो मैं यूज नहीं करी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन if b is equal to 2 find s at 3 second if at time is equal to 0 second the body is 2 meter behind the origin, the body is 2 meter behind the origin. In this case also we derive the displacement from velocity. So in this case we also use integration. Now integration use करो formula के भी मने पकेबो integration ही यूज होगा because we know that velocity is equal to ds/dc. तो displacement is equal to velocity into dt है. So integration भी यूज होगा. So displacement integration करो v dt. Here also there is no limit, so it is also indefinite integration. So s is equal to, in case of v, instead of v we put this value 2t. 2 is constant, so it is out from the integration. Then t dt. That implies displacement is equal to 2 t square upon 2. As this is an indefinite integration, so in this case also we add integrating constant c. And how can we find the integrating constant that is given as your question? देखो इन्हें फ्लो दीजिए बाद इन फ्लो को हमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बाहर करबो तो फ्लो को देखो फ्लो दीजिए at time 0 second if time 0 second
the body is 2 meter behind the origin. That means time যদি 0 সেকেন্ড হবা তাহলে বডিটা 2 meter behind the origin. Origin to 2 meter behind পছে হবা. That means h displacement is a vector quantity, so we consider with direction. So 2 meter behind the origin, that means displacement is minus 2. So if we put t is 0 second and displacement is minus 2 second, then we get the value of c. तो ई इक्वेशन को हमें c रो वैल्यू को बाहर करना और से ई इक्वेशन रे ही पुट करना जदर कि डिस्प्लेसमेंट पाएबो. तो इक्वेशन को हमें c रो वैल्यू बाहर करो. सो s जगह केते पुट करबो -2, t जगह रे 0 रिटर्न्स 0 हो जिबा, दैट मींस c is equal to -2. Then the equation will be s is equal to 2 t square plus 2 and c जगह रे तमे पुट करबो -2. Then finally question रे कहै displacement बाहर करबो 3 second. Then finally instead of t we use the value 3. Then s is equal to 2 t square जगह थी लगभग 3 square upon 2 minus 2 to cancel 9 minus 2 7 meter. आगु बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छे एक्सीलरेशन रो भी बाहर कर पाबो तमे जदी तमके एक्सीलरेशन दी जीवा वेलोसिटी पचरे जीवा ले वेलोसिटी और एक्सीलरेशन रो रिलेशन का एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, सो dv इज इक्वल टू a dt. तो इंटीग्रेशन करवा को बात तो एक्सीलरेशन रो भी वेलोसिटी तमके पचरे जीवा ले वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ऑफ a dt यूज होबा करबो. निजे बहुत गुड़ा क्वेश्चन अच्छे बही रे निजे प्रैक्टिस करबो. Next, equation of motion. Trigonometric equation of uniform acceleration. So equation means a mathematical expression जे जिनिसटा हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रो पाइनो. सो केते बेले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहबा इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट. सो सॉरी, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन देयर बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस रो हमें इक्वेशन के हिसाब से डिराइव करबा सेला देखते. तो इक्वेशन ऑफ मोशन, equation of motion means mathematical equation. That means हमें लिखी पाना the equation is derived from the relation among velocity, displacement, acceleration and time is called equation of motion. Equation of motion यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ला तर हमें बाहर करना जे के हिसाब से तम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम रु हमें मैथमेटिकल इक्वेशन माने पाई पारमा. सो मन रखियो खाली जे जिनिस हमें प्रूव करिक बाहर करना. जो फर्स्ट इक्वेशन होचे v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकंड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. थर्ड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. आउ भी अच्छे तो सब इक्वेशन माने हम डिराइव करना. इक्वेशन ऑफ मोशन का जे कह दोचे ई सब इक्वेशन के हम इक्वेशन ऑफ मोशन का जे कहमा बिकॉज़ in this equation the mathematical equation is represented with the relationship between velocity, acceleration, time, velocity, displacement, time. So in this case we say that this mathematical equation are equation for uniform motion. maldochi जगह में equation for uniform acceleration along a straight line. So जदि गोटे बॉडी का along a straight line जदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रे मूव करूची
ले केन केन इक्वेशन का हमें डिराइव करि पारमा हमें बाहर पारमा तो फर्स्ट body can suppose the body an object O moving with uniform acceleration along a straight line along x axis with positive direction आगे बड़ी बड़ी पड़ोची at any instant the position of the object is x0 in time 0 second and after some time t second the position of the body is x. Initially the body move with initial velocity u and after some time t second the body move with final velocity v. एक ही जिनिस हमें आगे लगवा के पढ़वा तो देखिए दो बिकॉज़ एक ही जिनिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight line रे अच्छे एक ही एक्सप्लेन कला परे हमें इक्वेशन डिराइव करके चलो तो फर्स्ट लिखी दियो कंसीडर an object moving with uniform acceleration along x axis with positive direction in this case जहाँ जहाँ तुम्हारा अच्छे लगी दबो x0 what is x0 position of object at time t is equal to 0 second what is x position of object at time is equal to t second and what is u u is the initial velocity of object at time initially 0 second रे object of initial velocity u and what is v v is the final velocity of object at time t is equal to t second. So in a लिखा दीजिए suppose consider an object moving with initial velocity u at time 0 second. At that instant the position of the object is x0 x0. After some time t second the body moving with final velocity v and cover a distance x. So इसकी तमार बुझा दीजिए ये लोग जेने वो शॉर्टकट में लिख दीजिए तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन पढ़वा फर्स्ट इक्वेशन से तमार वेलोसिटी आफ्टर ए सर्टेन टाइम फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी आफ्टर ए सर्टेन टाइम वेलोसिटी आफ्टर ए सर्टेन टाइम सो देखो हमें वेलोसिटी डिराइव करवा अच्छे तो मने रखबो वेलोसिटी डिराइव करवा अच्छे मींस वेलोसिटी के जदि हमें टाइम में डिवाइड करवा बेले काना पाइबा एक्सेलरेशन पाइबा तो वेलोसिटी रो डेरिवेशन का एक्सेलरेशन रो आसबा मने रखिबो जदि तमे डिस्प्लेसमेंट डिराइव करवा अच्छे तो डिस्प्लेसमेंट में जदि तमे टाइम डिवाइड करबो ले काना आसबा वेलोसिटी सो डिस्प्लेसमेंट रो डेरिवेशन का वेलोसिटी रो आसबा मने रखिबो तो छाड़ो तो ई हिसाब मने रखबो जदि तमे वेलोसिटी डिराइव करबा अछि ले वेलोसिटी रे टाइम डिवाइड करले का आसबा ए आसबा तो एक्सेलरेशन रो वेलोसिटी के डिराइव कर तो डिराइव करो सो इन दिस केस the average acceleration of body in time interval 0 to t second is given by average acceleration is equal to change in velocity upon change in time. In this case, change in velocity is final velocity minus initial velocity, and change in time final time minus final time t, initial time is 0. That means
average acceleration A is equal to v minus u upon t. That implies v minus u is equal to at. That implies v is equal to u plus at. This is the first equation of the motion. V is equal to u plus at. So first equation of motion, and this is velocity after a certain time. Then second equation देखा तो जब velocity derive करवा बोले velocity दे जब हमें time divided बोले क्या आसवा acceleration. तो velocity derive करूँ चुके हमें time derive करूँ acceleration को. अब सबू जहाँ भी derivation है बस सबू average acceleration, average velocity ये type रो average रो ही use करवा formula बने. तो second हमें नंबर distance covered in a certain time. Second equation, distance covered in a certain time. Distance covered in a certain time. So देखो हमें displacement बाहर करवा, तो displacement बाहर करवा अच्छे बोले हमें time divided पर क्या आसा velocity. तो डिस्प्लेसमेंट का बाहर करबो वेलोसिटी. सो द एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to t second is given by V average velocity is equal to change in distance, change in displacement upon change in time. In this case also we minus average velocity displacement का minus करना. Final displacement के x minus initial displacement के x0 by final time होते t2 final time होते t और initial time होते 0. So this is average velocity, and we know that average. How can we get the average? Average means in a दुईटा velocity रे body move करूचे initial velocity plus final velocity, total velocity जेहेतु दुई थर होचे divided by 2. So instead of average velocity we can retain u plus v by 2. That implies x minus x0 by 2. Then we find this value x minus x0. So this value will be separate. Then this is u plus v by 2 into time divided is a multiplication. That implies we can be written instead of v जगह में कितना लिख पाएंगे u plus at. So हमें लिखना x minus x0 is equal to u plus v जगह थी लिख लो कहते u plus at. अब फर्स्ट इक्वेशन में पाइलो v जगह थी तुम्हारा u plus at. Then upon 2 multiplication with t. Then solve this equation. Then x minus x0 equal to 2u plus 80 upon 2 into t. 2u plus 80 upon 2 into t. So 2 cancel. That implies x minus 0 is equal to t in a third multiplication होगा ut plus 80 square by 2, which can be written as ut plus half 80 square. So this is equation. तो वन दे चलो नो प्रॉब्लम. अब x is equal to x minus x0. x is equal to minus यार के बोले प्लस होगा x0 plus
ut plus half at square. This is equation. And instead of, we can be directly written instead of x minus x0 is s. Changing displacement. Suppose changing displacement is s is equal to ut plus half at square. So this is the formula of equation of motion, and this is the distance covered in certain time. And this equation, if we get this equation 1 and this equation 2, then equation 1 give the displacement time position, and equation 2 give the distance time position. So मन रखो सब आके हमें बाकी इक्वेशन टा पढ़मा। अब जेन डाउट अच्छे पचराबो मेसेज भी करबो और मन रखिथिबो जे डेरिवेशन टा स्टार्टिंग रु केनु स्टार्ट करबा सेटा होची इंपोर्टेंट। सो डिस्टेंस रो डेरिवेशन पचरे छे तो डिस्टेंस से जदि हमें बाय टी कले कोन मानिबा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रो ही हमें डेरिवेशन टा स्टार्ट करबो। थैंक यू। এটা কোন ওয়াটার